With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. Hello, my name is Vishnu Sasikumar. I secured All India rank 31 in UPSC Civil Services Examination 2023. I did my graduation in Political Science and Economics from St. Stephen's College, Delhi University. I graduated in 2021 and since then I've been preparing for the Civil Services. In Civil Service Exam 2022, I secured All India rank 394 and I've been allocated to the Danik Service. And this year I'm hopeful of getting into the Indian Foreign Service, which is my first preference. So now coming to my strategy for GS, especially on the value addition and the content, something आजकल market में बहुत सारी चीज़ें available है, there is a flood of materials that is available, so definitely बहुत सारे confusion होता है हमें कि हम क्या choose करें, कैसे करें, and because syllabus ही इतना बड़ा है, it takes time for us to finish, and जब content इतना बड़ा रहता है then there is a FOMO कि यार उसने वो कंटेंट पढ़ा, चलो मैं भी वो पढ़ लेता हूँ, इसने ये किया, ये भी कर लेता हूँ, ये भी अवेलेबल है, ये अच्छा लग रहा है, ये भी कर लेते हैं. सो दैट इज वन ट्रैप जहाँ हम सब गिर जाते हैं, एंड आई ऑल्सो वॉज देयर इन दैट वन ट्रैप. बट देन डेफिनेटली वन हैज़ टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट हम हमारा सिलेबस जितना मैक्सिमम वाइडली पॉसिबल हो सके उतना हम एनालाइज करें, उतना हम कंप्लीट कर पाए. सो माई फर्स्ट फिलॉसफी, माई फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि बी एज वाइड एज पॉसिबल. आप जितना मैक्सिमम कवरेज हो सके सिलेबस का उतना कीजिए एंड डोंट गो मच इनटू द डेप्थ. ज़्यादा टेक्निकलिटीज में मत जाइए. दैट वाज माय फर्स्ट फिलॉसफी दैट आई हैड फॉर व्हेन आई वाज कवरिंग द कंटेंट फॉर द GS जनरल स्टडीज फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. So that one thing in your mind, that would be really helpful for you, especially in technical subjects like geography हो गया, like science and tech हो गया. यहाँ पे we can get lost into a bottomless ocean. हम जितना डीप हो सके उतना जा सकते हैं. एंड में क्या होता है कि हम समझते भी नहीं है, एंड देन वी फील इन अ ट्रैप कि यार हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, especially when you are now trying to apply the knowledge and the logic that we did. So now coming to my sources, which I would detail. Before going to the sources, the first and foremost step which I did personally, which helped me, was कि मैंने UPSC syllabus का एक प्रिंट आउट निकाल के रखा था अपने पास, GS plus optional का, and I thoroughly read that syllabus. Firstly, UPSC syllabus ये कहता है कि a person without any specialized knowledge but a well-educated person would be able to write these papers, general studies का. And secondly, see the title of the paper. It is general studies. It's not like you are doing something specialized, right? तो ये एक आइडिया यदि हमारे माइंड में पहले ही हो जाए, you'll be able to restrict कि आप कितना डीप आप कंटेंट लेना चाहोगे, उस पर आपको एक रिस्ट्रिक्शन आएगा और आपको टेम्पटेशन भी नहीं आएगा. So obviously have a printout of the syllabus with you always. That really helps. And secondly, आप वो syllabus का printout लेके उसको thorough हो जाए, because जब आप content लोगे, especially current affairs जैसे newspapers हो गया, you will be able to understand कि कौन सा content relevant है और कौन सा content कहाँ पे आपको लगाना है. जैसे आपको पता है judiciary is a very important part in your GS2, and if you see any editorial on judiciary, you'll be able to easily place that content in GS2 GS2 as well as in your optionals like political science and international relations. So that one thing is the first step that you should do is have a syllabus ka print out with you and read it thoroughly. Now I'll come to my sources for basic as well as for the value addition that I did for GS. So GS1 obviously सबसे बड़ा थोड़ा बड़ा रहता है, history, art and culture, geography, society,
कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड ऑल्सो ये पूरा पोर्शन आता है उसमें. तो फर्स्टली यदि आप देखें तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. जब वो एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा. वन थिंग विच सरप्राइज मी पर्सनली वॉज, जब मैं GS1 सोचता था, माई माइंड ऑलवेज यूज टू गो टू हिस्ट्री एंड सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल. मुझे लगता था यार सबसे ज्यादा पार्ट उसमें से आता है. बट देन व्हाट सरप्राइज मी वॉज, जब मैंने PYQs एनालाइज किए, आई अंडरस्टूड दैट 7 to 8 क्वेश्चंस एवरी ईयर कम फ्रॉम ज्योग्राफी. एंड ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम प्रीलिम्स में उतना फोकस नहीं देते, बिकॉज हम बाकी सब्जेक्ट्स में इतना ये हो जाते हैं, इतना हम डीपली लर्न करने जाते हैं कि ज्योग्राफी हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं. बट देन सी मेंस में, GS1 में, अ लार्ज चंक, आई वुड से द बिगेस्ट चंक गोज टू ज्योग्राफी. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू फॉर ऑल GSs, एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स टू अंडरस्टैंड कि UPSC कहाँ से मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं. ओके, एंड आपको इतना एक पैटर्न होगा उसमें कि आपको खुद समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल GS2 में 10 मार्कर्स में लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड 20 मार्कर्स में लास्ट 2 क्वेश्चंस हमेशा IR से आते हैं. एंड दैट हैज द ट्रेंड दैट हैज बीन फॉलोड सो फार. GS3 में भी इंटरनल सिक्योरिटी अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस रहेंगे. So when come to 2 and 3, I'll talk that in detail. So 1 में the sources which I used was, let's come to geography first, the most important part. NCERT class 11th, class 12th, वो मैंने डिटेल पढ़ा. क्लास 11th का जैसे कुछ पार्ट्स हो गए, लैंड फॉर्म्स एंड ऑल, वो मैंने उतना डिटेल नहीं पढ़ा क्योंकि थोड़ा ड्राई था, बोरिंग था. आई वाज लकी इनफ कि उतने सवाल नहीं आए हैं ज्योग्राफी, मतलब लैंड फॉर्म्स एंड ऑल. दिस ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन फ्योर्ड. अगेन आई रिमेंबर कि मैंने फ्योर्ड में जो NCERT का एक डायग्राम मैंने बस ऐसा देखा था, वो मैंने डायग्राम बनाया था. And then I wrote about the fjords which I knew, and then why they are picturesque. Coming to geography, it was NCERT 11th, 12th, 4 books. PMFIS का website है geography के लिए, that is also very much helpful. Environment के लिए that is also helpful, but geography के लिए also diagrams and animations के साथ वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं. And some extra content that you feel, for example जैसे polar vortex हो गया, या फिर एक नए नए जोग्राफिकल फिनोमिनाज आ गए जैसे हीट डोम हो गया, या फिर कनाडा में जैसे रिसेंटली देयर वाज अ हीट वेव, ब्रिटिश कोलंबिया में एंड ऑल. सो व्हाई दीज आर हैपनिंग, ये सब करंट इवेंट्स उस PMFIS के वेबसाइट में अपडेट हो जाते हैं, विच इज नॉट देयर इन आवर NCERTs. तो आप वो PMFIS का वेबसाइट यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द लिमिटेड सोर्सेज दैट आर यूज्ड फॉर ज्योग्राफी, PMFIS का वेबसाइट एंड 11th 12th NCERTs. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली आंसर कीज फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे मैंने मेंस टेस्ट सीरीज किया था, that was also very much helpful because उधर से भी जो selected content था वो मैंने GS1 के लिए geography के लिए लिया था. Coming to history के लिए it was beneficial. I did a more difficult method during prelims itself, but that was beneficial for me because जो prelims का content था I was able to recall that and write it for my mains itself. So what I did was I did class 6th, 7th, 8th NCERT, ancient, medieval, modern. 11th and 12th का themes in Indian history का NCERT, R.S. Sharma and Satish Chandra for ancient and medieval. Modern के लिए I did spectrum. So these are my sources for history, and more or less these are also the sources for art and culture. Apart from that, I also did the नितिन सिंघानिया का art and culture भी मैंने पढ़ा था, so that I get a consolidated content कि मुझे scattered content मिल रहा था history book से. So नितिन सिंघानिया के art and culture book से you would be able to get consolidated content at one place. So that also I did for my art and culture. And again I was referring to the answer keys of various institutes, answer writing practice and answer keys of the various institutes for the mains test series. उनके answer keys से भी मुझे बहुत सारे content मिल गया था for the question for the art and culture. And one thing I personally did for art and culture was कि art and culture में examples play a very very crucial role. तो मैंने क्या किया, art and culture को divide किया, जैसे architecture, dance forms, paintings, literature, medieval architecture like the mosques, the tombs, lot of things जो भी art and culture में आता है, irrigation methods and all. इन सब के मैंने 5-5, 6-6 एग्जाम्पल्स पहले से ही नोट करके रख दिए थे, ताकि इन केस देयर इज सम क्वेश्चन कमिंग इन, एनी क्वेश्चन कमिंग इन विच कैन बी अ बाउंसर, उधर मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू पॉइंट्स जनरेट कर सकता हूँ एंड ये एग्जाम्पल्स लिख के अपने पॉइंट्स को थोड़ा और स्पेसिफिक बना सकता हूँ. सो आई मेक श्योर कि मैंने एग्जाम्पल्स की एक लिस्ट बना दी थी सो दैट माई आंसर गेट्स एनरिच्ड एंड इट बिकम्स मोर स्पेसिफिक कंपेयर टू अ जनरल आंसर.
So that was what I did for art and culture. Coming to society, which also covers portions like communalism, secularism, and all. Although it was a bit difficult for me because society mein the thing is, you were not able to get consolidated content somewhere. But believe me, newspaper reading really helped me this time for GS and society के कुछ questions थे, right? जैसे child cuddling हो गया, work from home का एक question आ गया. These all questions का एक ट्रेंड न्यूज़पेपर रीडिंग से मुझे आंसर्स के पॉइंट्स मिल रहे थे. तो मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग से I'll tell you one thing. This time I was reading around 8 to 9 newspapers per day during my प्री एंड मेंस के बीच का जो गैप है उसमें 8 to 9 न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, बट नॉट फुल्ली. हिंदू एंड एक्सप्रेस का मैं न्यूज़ पढ़ता था प्लस एडिटोरियल्स, एंड बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटोरियल्स में रोज पढ़ता था. एंड आई यूज्ड टू टेक अराउंड 2 to 3 hours टू कंप्लीट दैट. एंड इट्स नॉट दैट कि यार हर दिन आपको कुछ ना कुछ एडिटोरियल मिलेगा. इट्स दैट कि यार कुछ दिन आपको मिलेगा कुछ रेलेवेंट कंटेंट, कुछ दिन आपको रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा. सो इट बैलेंसेस आउट, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. एंड यदि आप इसका एक हैबिट बना दो, बिलीव मी, इसके जो कंटेंट दैट यू विल गेट from the newspapers, it's immense, and that really helped me for value addition for throughout all the GS. So that's what I did for my GS1 society. And obviously जो भी जैसे I used only IAS का society का material that was available in the open source the website, वो मैंने use किया था to get that base content. And again Google करता था सोसाइटी के कुछ भी एलिमेंट्स हो, आई यूज्ड टू गूगल दैट एंड आई यूज्ड टू रीड दैट अप, एंड उसके जो भी रेलेवेंट नोट्स थे वो मैं बनाता था. सो सोसाइटी के लिए एक हमारे पास कंसोलिडेटेड कंटेंट नहीं रहता, इट्स स्कैटर्ड. तो उसको कंसोलिडेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट वंस यू कंसोलिडेट इट नो इट बिकम्स वेरी ईजी. एंड ऑब्वियसली अगेन मेंस के जो टेस्ट सीरीज लिया था उसके आंसर्स में से मैंने पॉइंट्स निकाले थे दैट हेल्प मी फॉर माई एग्जाम्पल्स एज वेल एज जो करंट रिलेटेड सोसाइटी इश्यूज है उसके एक आइडिया पाने के लिए वो मेरे लिए हेल्पफुल था. एंड ऑल्सो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड उसके लिए भी एनसीईआरटी है. पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का एनसीईआरटी है. इंडिया पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम, दैट हेल्प मी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो दैट वॉज माई GS1 का पोर्शन, both the basic as well as the value addition content that I spoke about. Coming to GS2, which was my favorite. GS2 के लिए इस बार I could able to improve my score by a big margin. What I did for GS2 was basic तो लक्ष्मीकांत जो हम prelims के लिए पढ़ते हैं that forms the base. 11th and 12th का NCERT, 11th का Constitution NCERT, and I think 11th का वही है Constitution. Indian Constitution at Work, वो वाली NCERT played a very important role to have a base. Lakshmikant, newspaper editorials for key topics. GS2 is very dynamic, right? तो वो मैंने किया था. Then मैंने governance जैसे topics के लिए I used IAS 360 का open material that was available from the website. वो मैंने and that was also available from Vivek sir's Telegram channel. So मैंने उधर से भी governance के थोड़े notes उठा लिए थे. And obviously GS2 के लिए what worked for me was I was visiting the government websites, जैसे Ministry of Law हो गया था, Department of Administrative Reforms, ये सब मैं वेबसाइट विजिट करता था. तो आई वॉज एबल टू गेट एन आइडिया लाइक सिटीजन चार्टर एंड उसके पॉइंट्स सब उसमें से मिलता था. तो दैट वाज समथिंग विच आई डिड फॉर GS2. एंड GS2 के लिए अगेन newspapers played a very very crucial role because my optional was also PSIR, तो मेरा newspaper investment उसमें बहुत worthwhile था. तो उसमें से मैंने जुडिशरी का हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म which has formed a very basic, a very basic part of mains now, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, how Supreme Court is changing, interpreting the constitution, how constitution has evolved so far, उसके ऊपर जो भी कैसे केसेस आ रहे थे वो सब न्यूज़पेपर एडिटोरियल से मुझे बहुत सारा कंटेंट मिला था. स्पेशली केसेस के नाम, मैंने कोर्ट केसेस के नाम बहुत सारे इस बार कोट किए थे. दैट रियली हेल्प मी एंड दैट आई वॉज एबल टू डू बिकॉज आई वॉज एबल टू रीड द न्यूज़ पेपर्स वेरी मच. तो दैट आई डिड. एंड लास्ट ईयर एंड दिस ईयर वन थिंग आई डिड कॉमन वॉज मेरे GS2 आंसर्स में 3 थिंग्स बताए. कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स and committee recommendations. These 3 things I tried to incorporate in my answers everywhere in GS2, and that again has helped me a lot.
That was my part for GS2. IR, now coming to IR, what I did was MEA का वेबसाइट था, MEA के वेबसाइट से I was able to get जो भी countries के relations है उनका MEA के वेबसाइट से बेस कंटेंट ले लेता था. एंड देन ऑब्वियसली PSIR का एक बैकग्राउंड था, तो वो PSIR नॉलेज भी PSIR की जब पढ़ाई कर रहा था उसका वो नॉलेज कंटेंट में इधर भी यूज़ किया था. एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई डिड was MEA का न्यूज़लेटर. There was an yearly newsletter that MEA released. I read that and I was able to contain the latest content for MEA for the India and the foreign policy वाला part. And also one more thing is, you know, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, आपको एक ट्रेंड पता चलेगा which organization is gaining importance. जैसे जिस टाइम हमने मेंस लिखा था, there was this UN treaty beyond jurisdiction, UNBBJ, I'm not able to recollect the name correctly, and IMO पे एक सवाल आ गया. Then World Trade Organization का MCA चल रहा था. That was also something, you know, which was there in the newspaper for a very long time. वो भी हमने पढ़ा था. And that question came in PSIR, fishery subsidy or licensing agreement. That is something that came. And then last year also, if you see, we were able to predict IR because we knew what the trends were, right? For example, Sri Lanka आया था, SARC and BIMSTEC आया था. Because BIMSTEC first time charter कुछ create हुआ था, charter नहीं, institutionalize हुआ था. And then there was a question on, you know, 3 to 4 questions based on the newspaper themes. And इस बार also if you see, SCO पे सवाल आया था. Why? Because India was holding the chairmanship of SCO. There was a question on SCO. IMO पे सवाल आया था. Then diaspora पे सवाल आया था. Why? Because we had a lot of, you know, Indian diaspora holding positions of power in other countries like UK Prime Minister Rishi Sunak, the Vice President of United States Kamala Harris, or for the matter of fact Ireland KB Prime Minister, I'm not able to recollect the name, it's also coming from India, Indian you know, roots. तो डायस्पोरा का भी बहुत स्पेसिफिक था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट इंडिया विल हैव, राइट. तो ये सब आपको कहाँ से मिल रहा है? इट्स बिकॉज यू नो यू आर एबल टू गेस अ ट्रेंड फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स. तो इधर न्यूज़पेपर रीडिंग आपको बहुत बहुत हेल्प करता है बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड यू विल हैव अ जनरल अवेयरनेस दैट इज देयर इन द वर्ल्ड. So these were my sources for GS2 value addition plus the base content and PSIR knowledge. Again, I read some parts from Oxford Companion to Indian Politics, Oxford Companion to Indian Constitution. ये दो बुक्स मैंने थोड़ा selectively read किया था, so I was able to get some content, specialized content on constitutional amendments, constitutionalism, the judiciary and all. तो ये सब I was able to get through that. अगेन जुडिशरी एक न्यूज़पेपर्स में एक पॉइंट बहुत ही हॉटली डिबेटेड आर्टिकल्स आते थे एंड जुडिशरी पे भी सवाल आ गया था. तो न्यूज़पेपर रीडिंग रियली यू नो इट हेल्प्स यू अ लॉट. देन कमिंग टू GS3. GS3 सबसे थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं मैं बहुत डिफिकल्ट कहूँगा क्योंकि बहुत ही अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स आपके साथ आ जाते हैं. यू हैव इकोनॉमी व्हिच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डिड इन प्रीलिम्स. Then you have internal security, you have disaster management, you have environment, you have science and technology. So बहुत सारे variety of ये आते हैं. Over here what I did was I referred to the coaching materials that were given to me down from the south. I referred to Lead IAS का some coaching materials that were given, handbook on the agriculture, on disaster management and all. तो उससे मेरे को कंसोलिडेटेड बेस मिल गया था. सो दैट वाज माय बेस नोट्स. इकोनॉमी के लिए सेम आई डिड दैट. लीड आईएएस की जो रेफर्ड नोट्स थे आई डिड दैट टू बिल्ड अ बेस कंटेंट के लिए. एंड देन आफ्टर दैट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आई रेफर टू द NDMA का वेबसाइट टू गेट एन आइडिया ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. देन आफ्टर दैट science and technology was very challenging personally for me. Again, science and technology, what I used to do was newspapers were my go-to source. I refer to the newspapers and जैसे हमें पता चला artificial intelligence is something you know very much in news. Read about artificial intelligence, Google किया था मैंने and science and technology के लिए one approach which I used which was helpful for me was science and technology का application भी आप पढ़िए. Not only the technology but how it is useful for us, how we are applying it on day-to-day basis. And उसके limitations क्या है. That was my template that I used. So science and technology I did that.
एंड न्यूज़पेपर्स वन माई गो टू सोर्स अगेन, एंड उसमें मैं गूगल करता था. जैसे जेन ए आई आ गया, जनरेटिव ए आई, जनरल ए आई, देन ड्रोन्स वेर इन न्यूज़ लाइक ड्रोन दीदीज एंड ऑल्सो आई रेड अबाउट ड्रोन्स. Then there was this news on biotechnology, some sort of a news was there. I read about biotechnology, biofuels. There was a global biofuel alliance and also science and technology part में ऐसा coverage आया था. But that's something that वो हम newspapers पढ़ के हमें science and technology का content develop किया था मैंने. And then obviously आंसर राइटिंग मेंस टेस्ट सीरीज से जो भी मैंने आंसर्स दिए थे उनका कंटेंट भी मैंने अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट फॉर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. इंटरनल सिक्योरिटी अगेन आई रेफर टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मटीरियल्स लाइक लीड आईएएस का इंटरनल सिक्योरिटी का मटीरियल था. I was short and crisp, so I was able to finish that. न्यूज़पेपर रीडिंग जैसे नो मनी फॉर टेररिज्म एक काउंसिल मीटिंग हुआ था, देन काउंटर टेररिज्म का एक मीटिंग भी हुआ था, एमएचए ने किया था इधर, एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन ऑल्सो केम अप इन दिस ईयर और लास्ट ईयर्स मीन्स. So I think when newspaper reading also again helped me for GS3. GS3 is one of the most dynamic portions in your mains, and उसके लिए newspaper really plays a very crucial role in your preparation. And कोई भी part हो GS3 का, जैसे agriculture हो गया, economy हो गया, internal security हो गया, I was able to get a trend. Yeah, whatever new ideas that were being discussed in the discourse, उसका एक आइडिया सिर्फ आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स उस डिस्कोर्स को चलाते हैं they write that in their opinions in the newspapers. So reading that newspaper, reading that editorials help you to gain that discourse कि क्या चल रहा है, right? So that is something that that I used for newspaper reading, मतलब for GS3 for all the portions. तो वो that I was able to do that, and that really helped me in my value addition for the content. And believe me, जब मेरा value addition हुआ content का, I was able to bring in new and novel points in my answers, which also impressed the examiner who was correcting my papers in the mock test. And has also helped me to कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आई डिड नॉट वांट टू थिंक. जब मैं स्टक हो जाता था सडनली न्यू पॉइंट्स मेरे मन में आ जाते थे, सो मैं आई वॉज नॉट एबल टू बी स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हाइल राइटिंग एन आंसर. सो कंटेंट होने से भी ये भी एक फायदा रहता है. फॉर इंटरनल सिक्योरिटी आई ऑल्सो रेफर टू एमएचए का वेबसाइट, जहाँ पे एक पीपीटी दिया था फॉर फुल इंटरनल सिक्योरिटी का एक स्लाइड. आई यूज दैट, एंड उधर भी बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए थे विद स्टैटिस्टिक्स. Economics also, I use the statistics. Niti Aayog ka website is a good gem that you can use. Then apart from that, I think answer writing practice helped me. That the points again from answer writing helped me to complement my existing content. So again it was a mixture, is an amalgamation, and इसको compile करने में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि this is the one of the most diverse aspect of your syllabus. GS4 ethics personally was a challenge for me also. Last year I could not score so good, but this time I was lucky enough to increase my content. This time what I did was I followed KM Pati sir's ethics class, and that was really helpful for me because that helped me to clear my fundamentals on ethics, and उससे मेरा content भी build हो गया था. So that's what I did for ethics. And obviously answer writing practice, I took a lot of test series for ethics, multiple test series लिया था मैंने, and वो मुझे again helpful रहा because I got my answer writing practice. And one thing I had a fear of ethics because last year का ethics paper बहुत ही लंबा था, तो I practiced my answer writing keeping in mind the last year का standards. तो जो बहुत ही लेंथी 5 या 6 सब क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस को मैं लिख के प्रैक्टिस करता था. Again that really helped me because when I wrote this year's ethics paper, it was not so long compared to last year, so I was able to complete my paper well in advance, like I had 5 minutes left and I was sitting calmly. So I think वो मेरे लिए बहुत helpful रहा है. And then obviously my knowledge and PSIR helped. And ethics के लिए one thing is last year मैं थोड़ा mechanical था approach में. इस time I focused more on organic way, like for example मैं answers में paragraph and points दोनों का format लाता था. जैसे code based क्वेश्चंस हो गए, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, उधर मैं पैराग्राफ में लिखता था बिकॉज आई अंडरस्टूड कि पॉइंट्स में फिर आप सब हेडिंग बनाओगे, ये करोगे, उसमें पर्सनली थोड़ा मैकेनिकल हो जाएगा, पर्सनली व्हाट आई फेल्ट. एंड बट जब आप पैराग्राफ लिखते हो यू विल गेट अ नेचुरल फ्लो. इट वाज लाइक अ मिनी एसे दैट आई फॉलोड फॉर ethics this time, and it really helped me pay off.
एंड अगेन मैं कंटेंट बढ़ाया था मैंने इस बार एथिक्स के लिए, एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट ऑल्सो इंक्रीज्ड. सो व्हेन आई अंडरस्टूड द कंटेंट आई वाज एबल टू अप्लाई द फिलोसोफर्स, द थिंकर्स, द आइडियाज विच वर प्रेवलेंट इन एथिक्स, वो मैंने इधर आंसर्स में अप्लाई किया था, एंड दैट हेल्प मी इन माई एथिक्स का आंसर्स. सो अगेन इट वॉज आंसर राइटिंग. एथिक्स के लिए मैं अलग से डेली आंसर लिखता था, जस्ट लाइक व्हाट आई डिड फॉर माई ऑप्शनल, 2 answers per day for ethics, and that helped me develop my skill for answer writing, and again got it reviewed from different people, so from my peer groups. So again उससे मुझे एक फ़ायदा हुआ कि I was getting different opinions, and that was what I did for ethics. Ethics में again there is an overlap with governance, जैसे administration ethics and all हो गया. You can refer to the government websites like Department for Administration, Administrative Reforms. So उधर से भी you will get your content for GS4. बाकी का it is a difficult part to do, but then once you get the knack of ethics, कि आप एक base knowledge आपका हो जाए, it is actually a very fun paper to write, which I realized this year. So I think the common thing for all the papers which I did this year was practice, practice, practice. I took a lot of open tests. शंकर का open test लिया, विशन का अभ्यास लिया था मैंने. I also took test series at different institutes. So the practice of answer writing, that really helped me to come up with, like, I was able to write my content within that 7 minute या 11 minute का constraint with that pressure. वो practice में multiple times कर पाया, इसीलिए I was able to retrieve that content even during my actual UPSC examinations. तो जितना हो सके आप आंसर राइटिंग कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आप कंटेंट सब हम सभी यही गलती करते हैं कि हमें लगता है कि यार पढ़ता जाओ आई विल बी एबल टू डू दैट, बिकॉज हमें लगता है इट ऑब्वियसली इज नेचुरल कि यू थिंक यार मैं जब आंसर राइटिंग करूंगा या फिर मैं जब एक टेस्ट सीरीज लिखूंगा, मैं कुछ पढ़ाई का मेरा आई विल बी मिसिंग आउट ऑन स्टडिंग समथिंग न्यू. बट देन बिलीव मी, what is that UPSC seeing at the end of the day? It's your answers, right? So you need to master your answer writing skill in order to ensure that you are able to get a good rank and a good marks in your return, right? तो आप वो philosophy आपके मन में रखें कि it is not your content. How is your content going to reach there? Your content is going to reach through your answers, right? तो आप वो answer writing पे focus कीजिए, maximum content हो सके आप मतलब try to retrieve that in your answers. And how you are able to do that? You're able to do that because you practice. And यदि ये exam सिर्फ content का होता, then believe me, people with PhD and all, they have so much rich content, so much rich experience than us, right? सिर्फ वही लोग पास करते, right? But then the thing is, this examination requires a different skill set of writing, of depicting your answers in the most presentable manner. तो वो एक idea आप यदि रखोगे, then you will automatically, start practicing your answer writing. And that is what I also had personally done. I did multiple answer writing practice. Exhausting था, it is very exhausting. I did daily answer writing practice. वो जो 3 months था, I did a daily answer writing practice personally and with review from my group, from my mentors, and that really helped me, to develop, to master my, I would not say master is a very, big term. I would say to improve my answer writing skill. And that really helped me in this year's mains examination as well. So I think I have told you with respect to the GS. So just focus on your answer writing along with the content, and don't forget to practice as much as you can. And it's difficult, initial inertia रहता है, but believe me, if you enjoy the process, then it will be a fun, because it gives us immense joy जब हम अपना answer खुद देखते हैं, like something which you have created. It gives us immense joy when we see that, right? So just have that mindset, and you'll definitely do good. Thank you.